Deafblind Convention India 2023, Goa, organized by Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities. We also have Shri Guru Prasad, like to have you join as well, sir. We also have Srimati Sandhya Kamath, Director of Social Welfare. Taha Hazik, Secretary, Disability Commissioner. I'd like to invite Sri Taha Hazik, put your hands together for Sri Taha Hazik. May I request person with deaf blindness and specialist network support, Sense India. Please put your hands together for Ms. Shruti Lata Singh. May I invite Sri Sachin Rizal, Head Capacity Building, Sense International India. I'd like to see you join as well on the back. And we have Father Savio Fernandez. Father Savio Fernandez is Assistant Director, Caritas Goa. I'd like to invite him. As a token of appreciation, we would now like to present our distinguished guest with a handmade flower bouquet and a memento. And for this, may I invite Shruti Lata to present a special handmade bouquet to our chief guest, Shri Rajesh Faldesai. We have a special handmade bouquet and a memento for our chief guest. Put your hands together, ladies and gentlemen. Yeah. May I thank you, Shruti Lata. May I invite Shubham to present a handmade bouquet and a memento to our. Let's put your hands together, ladies and gentlemen. May I invite Pushpa to present a handmade bouquet and a memento to Sri Guru Prasad Pavaskar, Disability Commissioner, Goa. Let's put your hands together. May I invite Shefali to present a handmade bouquet and a memento to Srimati Sandhya Kamath, Director of Social Welfare. May I now invite Shubham once again to present a handmade bouquet and a memento to Sri Taha Hazik, Secretary, Disability Commissioner, Goa.
may I invite Shruti Lata once again to present a handmade bouquet and a memento to Sri Akhil Paul. May I invite Shefali once again to present a handmade bouquet and a memento to Father Patrick Fernandez. May I invite Shefali once again to present a handmade bouquet and a memento to Miss Shruti Lata Singh. May I invite Shubham once again to present a handmade bouquet and a memento to Sri Sachin Rizal. Thank you. And ladies and gentlemen, we will now have the lighting of the traditional lamp. May I request our chief guest and our distinguished guest to kindly step forward for the lighting of the traditional lamp. Ladies and gentlemen, may I request our distinguished guests to kindly take your seats. We will now have the welcome address by Sri Akhil Paul. Sri Akhil Paul is the founder of Sense India from 1997, recipient of various prestigious awards like the Mahatma Award, National Award from IIM Lucknow, and has been representing the works for persons with deaf blindness nationally and internationally as well. Ladies and gentlemen, I want you to put your hands together as I invite Sri Akhil Paul, Director, Sense India. Good morning, everyone, and a very happy New Year to you all. And I'm very happy to see my friend Zamir sitting in the front row. Welcome, Zamir. One of the most prominent deafblind people the country has produced. A special welcome to our Minister Sir, Subhash Ji, our MLA Sir, Rajesh Ji, Guru Prasad Sir, the State Commissioner, Father Maverick, Director, Madam. You all have given a new hope to deafblind people by making sure that the Purple Fest is starting today with a deafblind convention. So I इतना बड़ा पर्पल फेस्टिवल जो प्लान हुआ, जिसके कर्तन हरदा आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत गौरव की बात है कि डेफ ब्लाइंडनेस जो
2016 तक हमारे किसी एक्ट में जुड़ी नहीं थी। It was not seen anywhere in the policies and the acts of the government of India till 2016. आज पर्पल फेस्टिवल जो गोवा में पहली बार हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है हमारे डेफब्लाइंड ट्रेनिंग और कन्वेंशन के साथ। So I am very grateful to all the think tank of Purple Fest. Including the Honorable Chief Minister जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं पर्पल फेस्ट को। आप उनके ट्वीट्स देखिए, आप उनकी कमेंट्स देखिए, आप उनके पोस्ट देखिए, तो आपको पता चलेगा वो कितना डीपली इन्वॉल्व है इस इंस्टीट्यूशन के फेस्टिवल में। तो एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी शुरुआत गोवा ने एक बार फिर देश के लिए की है। एंड आई कांग्रेचुलेट द होल गोवन पीपल फॉर दिस वंडरफुल फेस्टिवल। जहां तक मेरी जवाबदारी जो आज दी गई है, मैं दोनों भाषा इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पूरे देश से पार्टिसिपेंट्स आए हैं सर, पूरे 23 स्टेट से, और सभी लोगों के लिए अंग्रेजी समझ पाना या हिंदी समझ पाना पॉसिबल नहीं है। So I'm using both the languages so that both of them can understand, both people can understand from various parts of the country. सेंस इंटरनेशनल इंडिया की शुरुआत 1997 में हुई। उस समय जबकि पूरे देश में सिर्फ 23 डेफब्लाइंड बच्चों के बारे में जाना जाता था, और वो जो काम शुरुआत किया था हमारी स्वर्गीय लेट बेरोज बादशाह ने हेलेन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफब्लाइंड की शुरुआत की। और उसके प्रोड्यूस जो है, उसका एक प्रोडक्ट आपके सामने बैठा है जमीन, जो पूरे वर्ल्ड में लीड करता है डेफब्लाइंड के मूवमेंट को। तो वो एक मात्र संस्था थी 1997 तक। पूरे देश में करीब 5 लाख डेफब्लाइंड हैं, उनके लिए सिर्फ एक संस्था जहां की वेटिंग लिस्ट 5-5 साल चलती है। The wait list for getting admission in Hamilton Institute for 5 years because they didn't have that much of capacity. Now, when we started, what we thought that एक स्कूल शुरू करने से बेहतर है कि हम स्कूल को, सर्विस को गांव-गांव घर घर लेके जाएं। तो सेंस इंटरनेशनल इंडिया started training people, training educators and going to NGOs to start deafblind program. जिनके पास पैसे नहीं होते थे उसके लिए हम पैसे इकट्ठे करते थे और संस्था में डेफब्लाइंड प्रोग्राम शुरू करने के लिए इस तरह से हमने शुरुआत की। और हमारा जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि कोई भी डेफब्लाइंड बच्चा या उसके माता पिता, दे शुड नॉट बी ट्रैवलिंग मोर देन अ डे टू रिसीव अ प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विस फॉर देयर चाइल्ड। दैट इज आवर गोल। और उस गोल के साथ हमने 23 राज्यों में अपने पार्टनर संस्थाओं के साथ डेफब्लाइंड प्रोग्राम शुरू किए। तो ये एक शुरुआत, और इसमें भारत सरकार का, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का हमको बहुत सहयोग मिला। जबकि डेफब्लाइंडनेस इंक्लूडेड नहीं था तब भी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी जेंडर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमारे 2 ट्रेनर्स हैं, गुंजन एंड लखलाई मैम, बीना मैम। ये दोनों डेफब्लाइंड एडल्ट्स, उनके पेरेंट्स और एजुकेटर्स के साथ अलग अलग सेशंस में उनको ट्रेन करेंगे। और ये पॉसिबल हो सका सिर्फ हमारे जो डोनर्स हैं, जो डोनर्स आप इसमें देखेंगे, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, साथ ही चिल्ड्रंस फंड है, पर्पल फेस्ट के, आपने पूरा गोवा हमारे लिए खोल दिया सर। इतना मतलब जब भी हम लोग बात करते थे तो ये कहा जाता था कि आप बस आ जाओ, बाकी सब हम देखेंगे, और वो हो रहा है सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। जो सपोर्ट दिया है टू अरेंज एवरीथिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द होल कैरिटास टीम। We are very grateful to the St. Joseph Center for opening this center for us, arranging everything। और आज जो आपने particularly मिनिस्टर सर, एमएलए सर, आप यहाँ आके जो इस प्रोग्राम को आपने तवज्जो दी, जो इम्पोर्टेंस दिया है, deafblind people will always be grateful to you for that. So with these words, I thank you and I thank each one of you जो अलग-अलग प्रदेशों से यहाँ आए हैं। आप बहुत ट्रैवल करके आए हैं, कुछ लोग अभी रास्ते में हैं। आप सबको बहुत
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक हिस्ट्री का, एक इतिहास का हिस्सा आज बने हैं पर्पल फेस्ट की शुरुआत करके. With these words, I thank everyone. Elias, over to you. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now have a briefing of the event by Mr. Sachin Rizal, Head Capacity Building, Sense India. Sachin has more than 18 years experience in working with persons with deaf blindness. He is the first deaf-blind interpreter in India. He leads all the capacity building activities of Sense India. May I invite Sri Sachin on the dais. Good morning, everybody. सबको नमस्कार और सबको हैप्पी न्यू ईयर. First of all, I would like to thank Honorable Chief Guest, Mr. Subhash, and Chief Guest Mr. Rajesh, and dignitaries and guests. I would like to give a brief about the training we have 3 days in Goa. So the training itself is very, very different from what we used to do earlier. This training is on sex, sexuality and gender. This training is very unique. Why? Because in our country, talking about sex, sexuality is a taboo. And you'll be happy to know that we are here talking about sex, sexuality and gender here in spite of all the taboos. And I would like to thank the government of Goa, the minister, the chief guest, everyone for welcoming this different kind of topic to be introduced in such a wonderful place. Thank you very much. So, as you know, that deaf blindness is a very unique disability. When you talk about deaf blindness, we only think about a person who is not able to see, not able to hear, but there are different aspects associated with this disability. A person with deaf blindness, when they are very small, when they are a child, they are not able to see, not able to hear, and they are not able to learn many things from the environment. So, the entire information which they receive through their tactile senses. देख के नहीं समझ में आता है, सुन के भी नहीं समझ में आता है, लेकिन सिर्फ छू के समझ आता है. So they are dependent on touch. So it is said that 95% of the information which we receive from the outside world is from sight and hearing. So imagine when a person loses 95% of the information. 5% of the information is received through touch and other senses, which is smell and taste. So most of the person with deaf blindness relies on touch, taste and smell to access information from the outside world. So बाहरी दुनिया से जो information, talk about rehabilitation of person with deaf blindness. We only focus on activities for daily living, skills, orientation and mobility, okay, communication. But what about understanding self? खुद को जानना, खुद को पहचानना कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ या मैं कोई और. वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? जो साइटेड हियरिंग वर्ल्ड में हम ये इंफॉर्मेशन स्कूल में नहीं पढ़ते, हम देख के और सुन के रिसीव करते हैं. हमारे दोस्तों से बातचीत करते हैं. हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कम इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. हमारे टीचर्स भी बहुत कम इंफॉर्मेशन देते हैं. लेकिन आप इमेजिन कीजिए जो पर्सन पे डेफ ब्लाइंडनेस है, जिनको दिखता भी नहीं और सुनता भी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से है? और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ खुद को पहचाना ही नहीं, खुद को सेफ रखना भी. सो ये 3 दिन का ट्रेनिंग हमारे डिफरेंट 3 ट्रेनिंग चल रहा है. एक एडल्ट विद डेफ ब्लाइंडनेस के लिए जो 16 से
3 अलग-अलग ट्रेनिंग अलग-अलग ऑब्जेक्टिव से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला ट्रेनिंग जो एडल्ट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस के लिए है, उनके लिए खुद को पहचानने के लिए बात कर रहे हैं। सेक्सुअलिटी एंड जेंडर क्या है, ताकि वो ये जान के उनको ये समझ में आए कि अपने आप को पहचाने और फिर कोई भी सेफ गार्डिंग इश्यू है ना उससे प्रोटेक्ट करें। प्राइवेट पब्लिक के बारे में जाने, प्राइवेट स्पेस, मेरा प्राइवेट स्पेस क्या है, मेरा पब्लिक स्पेस क्या है, कहाँ पर मेरे को कपड़े चेंज करना है, कहाँ पर नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे जानकारी भी हमको उनको बताना पड़ता है। अगर नहीं सीखेंगे उनको समझ में नहीं आता है। सेकेंड, पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्टी है कि ये सेक्स एंड सेक्सुअलिटी कैसे पढ़ाए, क्योंकि हमारे जब दिमाग में टर्म सेक्स आता है तो हम ये जानते हैं कि अरे ये तो बहुत ही गंदी बात है, हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सेक्स, जो टर्म सेक्स है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द सेक्स, इट इज आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, नोइंग सेल्फ, एंड विद द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इट्स आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग बॉडी। तो अब बॉडी के बारे में जानकारी हम 16 साल 18 साल के बाद में तो नहीं दे सकते। हम उनको जब वो 3 साल के बच्चे होते हैं तब उनको हम सिखाना जरूरी है कि हमारे हाथ का है, पैर का है, नाक का है। तो ये सभी हम इस ट्रेनिंग के द्वारा पेरेंट्स को बताएंगे। एंड एजुकेटर्स को जो चैलेंजेस आता है कि हम कैसे सिखाएं, तो ये ट्रेनिंग के द्वारा वो हम उनको बताएंगे कि क्या राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स है उनको सिखाने के लिए, और क्या स्ट्रैटेजीज होना है, क्या पॉलिसीज होना है। तो ये ट्रेनिंग 3 दिन के ट्रेनिंग को बताएंगे। सो ये 3 दिन के ट्रेनिंग के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके मन में जो भी आए आप आराम से पूछें, बिना झिझक, बिना संकेत के। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस 3 days of training. थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shri Sachin. We will now be having the opening speech by Ms. Shruti Lata Singh. Shruti Lata is a woman with progressive deaf blindness, the first deaf-blind physiotherapist in Asia. Yes, she deserves a round of applause. She went to UN World Data Forum to support another woman with deaf blindness regarding the specific data collection through census in India. She is leading Goan network. In 2020, she participated in the UN roundtable discussion on disability. She visits various government departments to raise the concerns and needs of persons with deaf blindness. May I now invite Ms. Shruti Lata Singh to give the opening speech. Good morning, everyone. And thankful to all the guests who are here, because of which this is possible. And also
awareness on services of Caritas for WEBTV in Goa. Respected Chief Guest, I just want to say the MLA of this constituency, local constituency, Minister from this side, Director of Social Welfare, Mr. Pavaskar, the Commissioner, Mr. Taha, Secretary of the Commission, Dr. Sachin, my dear friends. Then, at the outset, I would like to express my gratitude to the Commission for enabling this conference over here in Goa. Because when we check the dates, we were a little skeptical because this program was supposed to be held in Bangalore. And the Commissioner told us, all that here, let's have it over here. So it was a very straightforward invitation from Mr. Pavaskar to tell us, bring them from Bangalore to Goa. We'd be glad to have them as part of the Purple Fest. So we thank you, Mr. Pavaskar, for making this possible over here. And we're all grateful to you. The work of Caritas Goa towards the disabled people in the state today, incidentally, is the foundation day of Caritas Goa. We are completing 61 years of our existence as a body. So we have grown. We are mature senior citizens in the The first institute of education in the state of St. Xavier's Academy and a training become production center for special people started by Caritas in the state. And in this growth process, in 2012, since India approached us and said, there is something missing in your work and you need to introduce that over here. So, from 2012, we have started working for the interests of people who are deafblind, people with deaf blindness. And incidentally, Caritas Goa is the only organization in the state of Goa that works for people with deaf blindness. And we feel proud of it because we are the singular organization. In 2012, when we started this, we started in a very small way. Eventually, we moved it to another place. And today, we have one of the state-of-the-art centers in Saligaon, where a deaf-blind person can just enter the center and maneuver through the whole center on their own because of the architecture details that we have taken care of. For a deaf-blind person to walk into it, the flooring has been designed in such a way, the wall tactiles have been designed in such a way, so they themselves on their own can maneuver through the whole center. So this is a matter of pride for the state to go on to have a center of this sort, which is very set up and project by partners. So when our services, when we started, it was for North Goa. But incidentally, as we were working, we saw that there were also a lot of cases that were coming up in South Goa. And so from 2019, we started this work in South Goa and set up another center in Bordai, Margaon, where we cater for persons, children and young adults with deaf blindness. Today, we have more than 150 in North Goa children and young adults and around 60 in South Goa who are children and young adults whom we serve in this last 10-11 years of our work. So nearly 200 plus people that we reach out to in the services of Caritas Goa. When we began this work, we thought there are no deaf-blind people in Goa.
honestly, because that was our understanding that there are no deafblind people in Goa. When we started approaching clinics, when we got the active support of Sense India International and a very good hand-holding all through this journey, we were able to reach out to different professionals and make it known to them first. And then they began to say to us, but there are many, we didn't know where to send them. And that's how the numbers have grown over this 10, 11 years. Today, we are also very grateful to Sense India International, led by Akhil, Uttam, Sachin, and the other staff at different times, who have always accompanied us and helped us to grow in this service towards the deafblind in the state of Goa. We are really grateful to them. Dear friends, as I said, when we believed that there were no deafblind people, when we started this work, we found the first case where a child was tied to the bed in the home and the parents had gone for work, so they would come later. And that was the state in which these children with deaf blindness were. But incidentally, the services of Caritas, we were able to reach out to them. So this person today can travel on his own. We are so grateful to this active support of the parents and the collaboration of the guardians and the family, which has enabled us to reach out and make them more happier persons. We are also happy that some of our young adults have gone into becoming entrepreneurs. A few years back, he has set up his own stores. Last year, he has set up an ice cream parlor of his own. So this is how our children and our young adults can grow. Because the underlying motto of Caritas is not creating opportunities and accessing opportunities. We create opportunities. When we don't have them, we access it from others, so that the platforms are created for them to grow. This has been our mindset. That's all the work that is we do. We have around 28 different other projects that we run apart from deafblindness. Deafblindness is just one of our projects of Caritas. Apart from it, and everything is for the social dimensions, for the social upliftment of people in the state. So in this manner, Caritas has been growing for the past so many years, and for the past 11 years we have been doing it very particularly for deafblindness. And we are feeling so proud on this 61st Foundation Day of ours that we have a national conference being organized under the Purple Fest. So the government's active support to this work is very appreciated. I'm a priest. I don't have to stop. I start talking. But I was talking. Thank you to all of you. Thank you. And most importantly, welcome to Goa. Father Maverick, on behalf of everyone, I would like to congratulate you and Caritas Goa team. I want everyone to put your hands together for Caritas Goa. 61 years of service. Thank you, Father. May I now invite Shri Guru Prasad Pavaskar, Disability Commissioner of Goa, to address the gathering. Very warm good morning to all of you, and a very warm welcome to the state of Goa. The chief guest for today's function, Honorable MLA of Kumargaon constituency, Shri Rajesh Pardesai, our own Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Pardesai, Director of Social Welfare, Ms. Sandhya Ahmad, Secretary of the State Commission, Taha, Sense India International के सर्वे सर्वा श्री अखिल कौल जी, Father Maverick, Caritas, Father Savio, our special invitee, Mr. Dipesh from Enable India, all the other dignitaries who are present here, and friends. Well, today finally we are having this after a lot of talks that were happening between me and Father and Gable. Every 8 days we started this conversation 2 months back. When I told him we are having this Purple Fest, and he said, no, nobody will come. We are having a conference in
बैंगलोर। I said nothing doing बैंगलोर तुम लोग कुछ नहीं गोवा में करना है, कैसे करना है आप देखो। बट वो सब मेरे ऊपर आया। बाद में father used to call me, Gabriel used to call me, we multiple places we saw. We used to go to places, inspect the places, come back, some of the other things to happen, and finally we are here today. I'm so glad that we are doing this today here. Thank you so much. Deafblind convention which is happening here, I mean, it's one of its kind for the first time in Goa, if I'm not wrong. And Caritas has taken the lead. They've completed 60 years today. Many congratulations to the team. It is not an easy task. 60 years doing a human service to the selfless human service to the community is unbelievable. Let's do a big round of applause for Caritas. As we move ahead, the Purple Fest this is the first conference that we are inaugurating as part of the Purple Fest. We had three events yesterday morning at Miramar Beach where we inaugurated accessible e-rickshaws, we had floating wheelchairs, we had for the first time in India we introduced unified cricket match, which was like an inclusive sport where children with disabilities were paired with regular school students and they played a match on the beach. So things are moving, the planning has taken place, we have tried very hard, the team has had sleepless nights for last couple of days and months. A lot of planning has gone into this, and this would not have been possible without the unflinching support of Honorable Social Welfare Minister, who is here on the days. He has been with us on the ground. I mean, it's very difficult for a minister to be there with you throughout, and we have been harassing him, troubling him, and he has been, taking various demands to him, and he's there with us as a part of the team and not as a minister. So, I mean, we have a great team leader, and that's the reason we can, we could plan such a big event. Let's see how it takes hold in the next 3-4 days. And I'm sure with the participation of all of you, it will definitely be a great event. I again extend a very, very warm welcome to all the delegates who have come here from across the country, and it's a pleasure to have you all here. Thank you so much. Thank you, sir, for your kind words. May I now invite Honorable Minister of Social Welfare Goa, Shri Subhash Desai, to address the gathering. A very good morning to you all the dignitaries of the days and the delegates who have come across. The National Training on Deaf Blindness for Youth and Adults with Deaf Blindness. We have amongst us for this inaugural ceremony the Honorable Minister, and he is representing Kumbharu, and I am representing Sange, Mr. Rajesh Desai, the Commissioner for the State Office of the Person with Disabilities, my good friend and creator of all this Purple Fest, Mr. Guru Prasad Pavaskar, our dynamic Director of Social Welfare, Madam Sanjay Kamat. सेंस इंटरनेशनल इंडिया के बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सबको एक कन्वेंशन प्रेजेंट करने वाले हमारे अकील पॉल जी के साथ आए हुए उत्तम जी, साहिब जी और सभी सेंस इंटरनेशनल इंडिया के सभी कार्यकर्ता, मिस्टर ताहा जी, द सेक्रेटरी फॉर द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, Father Marvin Fernandez, Miss Shruti, Mr. Sachin, all the educator in the audience, the आज के जो वक्ता है, आज जो भी आपके सामने आपको ट्रेनिंग देने के लिए जो भी लोग आए हैं, ट्रेनर आए हैं,
Balani, Mr. Sachin Rizal, Mrs. Gunjan Sharma, and all others who have come to participate and for the purpose of training here, the press, media, और मेरे दिव्यांग भाई बहनों, मुझे लगता है कि हम सब लोग एक्साइटेड है या नहीं? We have come in Goa and I extend warm welcome to you all, and please be free if you have any inconvenience as regards to your accommodation, as regards to any food or anything. Please feel free. I am a minister here, but I will see to that my people reach out to you. If they don't, I will come down. I am minister, and I know I have several other departments to handle. Along with the social welfare, disability is one of the cell of social welfare department. Along with social welfare department, I have river navigation, I have archives department, I have archaeology department. But most of my time, 90% of my time for last 6 months, I have spent for this cell only. It is person with disability, and I know the importance of this. Nobody can reach out to you at this that level. So I felt that it is very necessary if I take initiative, and Mr. Guru Prasad Pavaskar is day in day out, is after me for this segment, this section of the community, to empower them socially, to empower them educationally, to empower them economically, to provide best of the quality education to each one of the Divyangs, and to see that they are protected, they are secured. They should feel that it is worthwhile living on this planet when everybody around is an inclusive kind of support that they receive, and they should not feel differentiated. So this is what we want to get, and इसके बाद में जो पर्पल फेस्ट होने वाला है अभी 6, 7 और 8 तारीख, आपको सबको पता है ना? पर्पल फेस्ट के बारे में सबको पता है? हाँ, तो ये 6 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन ये प्री फेस्ट एक्टिविटी है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है, हम बहुत ही एक्साइटेड है। आज के बाद 3 दिन लगातार आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन लोगों को सुनने में कठिनाई है, जिन लोगों को देखने में कठिनाई है, वो कैसे समझ लेते हैं? अब सभी लोग देखने के बाद पता कर लेते हैं ये चीज ऐसी है, इसको अनुभव कर सकते हैं। हम सुनने के बाद, जो भी देख नहीं सकता वो सुन भी सकता है, तो काफी हद तक उसको समझ सकता है कि मेरे सामने कैसा है। लेकिन जो देख भी नहीं सकता, जो सुन भी नहीं सकता, उनके लिए क्या है? उनके लिए यही सेशन में आप एम्पावर हो जाएंगे। आपको लगेगा इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें प्राप्त कर सकते हैं, और वी आर फिट टू लिव एंड वी आर डिटरमाइंड टू गिव आवर बेस्ट फॉर दिस सोसाइटी आल्सो, इजंट इट? हमारे एजुकेशन भी यहाँ पे है, इन्होंने बहुत सारी कठिनाई झेली है, और उसके बाद भी वो फिजियोथेरेपिस्ट होकर आपके सामने आ गई है। इतनी बड़ी शिक्षा। एक वर्ड आता है इम्पॉसिबल, इट इज वेरी इम्पॉसिबल। अगर जो भी सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता, तो वो इम्पॉसिबल ए वर्ड को अगर आपने ध्यान से देखा हो, आई एम, इट सेज दैट आई एम पॉसिबल, उसके बाद में बीच में अगर एक स्पेस रख देते हैं, एक ब्रीदिंग ले लेते हैं, आई एम पॉसिबल, और उसको इम्पॉसिबल को हम पढ़ रहे हैं पॉसिबल है, लेकिन द वेरी वर्ड इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल एंड वी रीड इट एज इम्पॉसिबल एंड वी कीप क्वाइट। इसके बाद में आपको पता चलेगा हमारी क्या काबिलियत है, हमें कितनी पोटेंशियल, हमें कितनी कैपेसिटी है, हमें कितनी एबिलिटी है, हमें कितनी क्रिएटिविटी है, हमें कितनी स्किल्स है। आज तक किसी ने उसको एग्जिबिट ही नहीं किया, उसको टच ही नहीं किया। तो आज के एजुकेटर आपके सामने आके आपकी सभी पोटेंशियल को खुद स्पष्ट करेंगे, और आपको पता चलेगा आपका कितना बड़ा स्ट्रेंथ है अपने आप में। आप खुद ही बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कोई भी आने दो, कोई भी आंधी आने दो, हम उसका सामना करेंगे, हम खुद ही उठकर चलेंगे, सामना करेंगे। एक वक्त था हम कहते थे कि
अपॉर्चुनिटीज बार बार अपनी द्वार पे नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी डू नॉट कम एवरी नाउ एंड देन एंड नॉक ऑन योर डोर। और जब भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसको कैप्चर करना है, उसको पिकअप करना होता है। लेकिन आज के दिन अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके डोर पे आएगी नहीं, नॉक भी नहीं करेगी। आपके सामने चैलेंजेस ही चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एवरी चैलेंजेस के बाद में आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर ही मिलेगी। लेकिन चैलेंजेस को फेस करनी है तो यही चैलेंज है। गोवा में आने का अपने आप में एक चैलेंज था। कैसे जाए, किसके साथ जाए, कौन हमें लेके जाएगा, कौन हमें समझाएगा, ये चैलेंज थी ही नहीं। आप यहाँ तक पहुंचे, आपने चैलेंज को स्वीकार किया, आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई कि खुद एक ट्रेनर आके आपकी सभी काबिलियत है, आपकी पोटेंशियल है, उसको जागरूक करेंगे, है कि नहीं? तो ये चैलेंज था, आपने स्वीकारा, आप गोवा में पहुंचे और ये अपॉर्चुनिटी बन गया। सो इसीलिए हम कहते हैं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं हमारे दिव्यांग आयुक्त मेरे दोस्त गुरु प्रसाद, आजकल मुझे सोने नहीं देते। सुबह उठने के बाद पहली फोन मुझे आती है कि हमें यहाँ वो प्रोग्राम करना है, इसको बुलाना है, इस मिनिस्टर को फोन करना है, इस एमएलए को फोन करना है, इस बस वाले को फोन करना है, इस ऑपरेटर को फोन करना है। लगातार उनका फोन आता है और मैं इंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझते हैं कि ये पोटेंशियल आगे है, इसके साथ ये काम होगा। यही मुझे बहुत ही खुशी होती है कि वो मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं। इस तरह की रिलेशन जब बनती है तो बहुत ही काम में बहुत ही सहजता आती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी दी। अगर किसी और के साथ वो होती तो इस डिपार्टमेंट में वैसा कुछ नहीं था। पहले भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा था इस डिपार्टमेंट को, और पहले तो मुझे लगा था किसको नहीं जाने वाला भी डिपार्टमेंट मुझे दे दिया है। लेकिन यहाँ आने के बाद, उसमें हाथ डालने के बाद, ये सर्विस देने के बाद मुझे पता चला कि इसमें भी बहुत ही पोटेंशियल है, कर दिखाने की ताकत है। आज से आप लोग दिव्यांग हो, दिव्यांग का मतलब क्या है? हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने कहा है, दिव्यांग शब्द क्या है? These are the angels of God. These are the special creations of the God and sent to the earth. आप देवदूत है, दिव्यांग है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं, और इस कमजोरी को, इस भावना को उखाड़ डालने के लिए हमारे एजुकेटर यहाँ पे आए हैं। आपकी सब काबिलियत को, आपकी सब पोटेंशियल को, आपकी सब स्किल्स को, आपकी सब क्रिएटिविटी को वो स्पर्श करेंगे और आपको एक अवेयरनेस दिलाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि यस आई कैन डू दैट, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। इसलिए आज का ये जो सेशन रहेगा, आज के बाद और 2-3 दिन ट्रेनिंग रहेगी, बहुत ही सुंदरता से, सफलता से हम उसको पूरी करेंगे और दुनिया का आपके तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस पर्पल फेस्ट के बाद में perception of the people will change entirely. I would say throughout India, all the people who come from here, we got around 4,900 delegates registration. We stopped it on 20th of December. We would have got 10,000 after looking at the environment and after looking at the passion of the working people around us. We have 1,000 volunteers. All those volunteers who have come अपने आप आए हैं। ऐसे किसी ने पूछा नहीं कि आप ये 2 दे दो, आप 50 दे दो, आप 100 दे दो। अपने आप खुद जैसे डेलीगेट्स आते हैं वैसे वॉलंटियर्स आते रहे। आप अगर 12 बजे भी हमारे ऑफिस में गए तो हमारे वॉलंटियर्स वहां पे काम करते रहेंगे। कोई रजिस्टर नहीं रखा है कि अटेंडेंस देना है, कुछ भी नहीं है। अपने खुद के पैसे से वहां पे खाना खाते रहते, काम करते, क्योंकि उनको भी लगा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी भी अपने खुद ही होकर बिना बताए अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जिस सेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, आज तक बहुत सारे इंजस्टिस होते रहेंगे, लेकिन इसके बाद में इनको अपने आप में एक रिस्पेक्ट होंगे, समाज में एक सम्मान होना है
कैसे होते हैं। हमारे ये ठाकुर कुणाल ठाकुर ने, ये पूरे दिव्यांग है, टोटली डिसेबल्ड, he cannot move, he cannot live, he cannot do anything, but he was put on that floating chair, he went straight into the sea। कितना आनंद है, जिसने आज तक समुद्र देखा नहीं था, जिसने आज तक किनारा भी नहीं देखा था, वो खुद ही जाके समुद्र में तैर के आया। इतना बेहतरीन अनुभव इस पर्पल फेस्ट के दरमियान अब बहुत सारे एक्साइटिंग अनुभव आपको दे देंगे। एक क्रूजिंग एक्टिविटी है, हर दिन में 500, कम से कम 500 लोग हमारे क्रूज पे जाएंगे, 1-1.5 घंटा यहाँ पे सफर करेंगे समुद्र की, वापस आएंगे। हमारे घर में एक भी चाइल्ड होता है ना, तो हमें कितनी तकलीफ होती है उनको वहां पे लेने के लिए। हम सोच रहे हैं हर दिन 500, कम से कम 500 लोग एक पूरा टूर करके आएंगे और जिंदगी में एक मजा लेंगे। So that all the people from all our country and internationally will come to Goa and enjoy all this facility। मैंने जब ये मिनिस्ट्री ली थी तो मुझे पता था कई हमारे असाइनमेंट से पड़े हुए थे। अब तक हमने 40 बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग्स है जहाँ पे दिव्यांग हर रोज जाते हैं, उनका जाना आना होता है, कितनी कठिनाई होती है उनको इस ऑफिस तक पहुंचने में। हमने 40 बिल्डिंग्स फुल्ली एक्सेसिबल कर दी है और 40 में भी है वो भी, जो भी जहाँ भी दिव्यांग लोग जाते हैं, जो भी स्कूल्स रहेंगे आजकल सरकारी खर्चे से हम करवा के ही लेंगे। तो ये हमारा पैशन है। और इसके बाद जिस तरीके से गुरु साहब इसको कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, हमने टीम टेक बनाया है जहां पे 60 फ्रॉम अमंग्स द दिव्यांग्स जो लेक्चर्स देंगे हर किसी के बारे में, हर दिव्यांगता के ऊपर। हमारी पॉलिसी एक बहुत ही मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए। इस देश में बहुत ही अच्छे एक्ट होने चाहिए जो आपको कायदा कानून न्याय दिलवाएंगे। They will do justice for all of you. They will secure your interest. They will protect you. They will protect you from atrocities happening within the house, within the community, or within the country, or on in public. तो इसके लिए हमने जब आवाज दे दी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ के साथ बातचीत की, तो he was very excited. He said that I will come down to Goa to see the Purple Fest. And not for 10 minutes, just to, not a guest appearance. He said that I will be there for 3 days, and you be the one, you be the assignment. Call the conventions all around, and I will be there to attend it. A person of that stature, a Chief Justice of India who cannot spend 10 minutes for any public function, he will come down and stay for 3 days. That is for you people. इतने सारे लोग आते, शंकर महादेवन देखिए, बहुत ही बड़े सितारे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी इनकी प्रोग्राम्स लगती है तो लाखों लोग आ जाते हैं। शंकर महादेव खुद आके बोल दिए, I will send my choreographer, I will send my team to train all the divyangs from all, मतलब जो भी है लगभग 60 दिव्यांग के साथ 1 महीना ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी म्यूजिक एकेडमी। और शंकर महादेवन पहले दिन में इनॉग्रेशन सेरेमनी में 6 तारीख को 5 बजे दिव्यांग के साथ अपनी म्यूजिक एकेडमी का प्रोग्राम करेंगे। कितना बड़ा प्रोग्राम है, इवेंट रहेगा दिव्यांग के लिए। आई विल नॉट गो इन डिटेल, बहुत सारी आपने प्रोग्राम की हुई लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मुझे बहुत ही धन्यवाद करना पड़ेगा हमारे अखिल साहब को, जो बैंगलोर में एक कन्वेंशन रखा था। गुरु साहब ने उनको विनती की कि आप कीजिए इस गोवा में इसकी बहुत ही जरूरी है। और हमारे फादर मेलविन साहब जो आज बहुत सारे दशकों में काम कर रहे हैं, 60 साल तक उन्होंने इस संस्था को यहाँ पे बहुत ही लगन के साथ किया है। उनके साथ रहेंगे सेंट जोसेफ सेंटर, कैरिथन गोवा और सेंट जेवियर्स, ये सब मिला के इसको क्यूरेट करते, देखभाल करते। हमारे गोवा में ब्लाइंड और ये जो डेफ और ब्लाइंडनेस रहने वाले लगभग 200 दिव्यांगजन हमारे भाई बहन हैं और ये इनका केयर लेते हैं। तो इसके
ये दोनों संस्थाएं सेंस इंटरनेशनल इंडिया और हमारे फादर मेलविन की ये जो जगह है, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सब जो व्यवस्था की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है दिव्यांग के लिए, सरकार न करे या न करे, लेकिन खुद ही करना है, इस हिसाब से उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और हम जैसे लोगों को ये सीख मिली है कि जो बड़ा नाम और एडवर्टाइज पब्लिसिटी करने के बजाय खुद का काम खुद ही कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं जिस अंत्योदय तत्व पे, the last person in the community or the society, it is our duty to reach out to all those people who have not been taken care so far. इनके लिए, उनके लिए आज के दिन मैं यही कहूंगा, प्रार्थना करूंगा, जो एनजीओ यहाँ पे सामने आ रहे हैं दिव्यांग लोगों के लिए, जो भी एजुकेटर है, जो भी साइन इंटरप्रेटर्स है, आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, एक भगवान का काम है। हमारे लिए इनके साथ में रहना, उनको समझना, उनको हर चीज का एहसास दिलाना बहुत ही अच्छा काम है। और लास्टली एक ही मिनट में मैं बता दूंगा आज का जो विषय है, जो अंडरस्टैंडिंग सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर ऑफ पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही मुश्किल काम है। पहले पेरेंट्स को भी समझ लेगा कि इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये हमारी राइट है। हर इंसान, ये कोई भी यहाँ पे धरती पर जन्म लेता है, इसमें से गुजरना ही पड़ता है और इसकी सीख हमें हमारे बच्चों को देनी ही चाहिए, बचपन में देनी चाहिए। अगर बचपन में हो नहीं सका तो आज आप इस कन्वेंशन पे आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस देश में सेक्स के बारे में, जेंडर के बारे में बात करना शायद ही हमको लगता है कि गुनाह है, लेकिन ये गुनाह नहीं है, ये हमारी मानसिकता ने इसको गुनाह बना दिया है, इसके बाहर आके काम करना चाहिए। I appreciate and I compliment the people who have taken this subject. It is very subject भी बहुत ही अच्छा है, educators और ये जो सारे लोग यहाँ पे आए हैं आपके लिए, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। I salute all those people who have been taking keen interest in helping out all our divyangs. And समझ लीजिए, दिव्यांग शब्द एक बहुत ही अपने आप में बड़ा शब्द है, बना है। हमारे माननीय पंतप्रधान ने आपको सम्मान देने के लिए एक चीज यहाँ पे लाई गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ओन द चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर एक्सटेंडिंग सच अ बिग सपोर्ट। ही सेज दैट यू गो अहेड, दिस इज फॉर अ नोबल कॉज व्हाट यू आर डूइंग एंड आई विल हेल्प यू आउट एट एनी केस। People may criticize us, people may say anything to us, we will not listen to them and we will reach out to each one of the divyangs and see to that they get the best of the infrastructure, best of the quality education. For their placements also we will work on. We have called a convention of all the industrialists on some day, what is it? 7th of this. We have called a big convention wherein Google, the representatives and the top officers from Google and Amazon will come and guide us. Without taking much time, I think this has become a workshop for you. I was given only 10 minutes, but I have taken at least 30 minutes of this, and I think that it is worth. Sorry if I अनजाने में अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैं 6 महीने से ही इसमें जुड़ा हूँ और मुझे बहुत सारी जो टर्म्स है वो मुझे खुद ही पता नहीं है कि क्या सही है क्या। इसीलिए आपके साथ once again I congratulate Mr. Akhil ji, Father Melvin and all others who have given you this opportunity. Thank you. God bless you. धन्यवाद. जय हिंद, जय गो. Thank you, Subhash sir, for all the support and encouragement that you are providing us with your ministry. I want you to put your hands together once again for our Honorable Minister of Social Welfare. Thank you, sir. May I now invite our chief guest, Shri Rajesh Desai, MLA of Kubarjo constituency, to kindly address the gathering. Welcome, sir.
फेस्ट एक्टिविटी में आज पर्सन विद डिसेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आदरणीय समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष पालेसाई जी, आदरणीय फाइनेंस सेक्रेटरी दिव्यांग आयुक्त श्री गुरुप्रसाद जी, सचिव तामा साहब, डायरेक्टर संध्या कामत, फादर मेलविन फर्नांडिस, हमारे इंडिया के जाने माने अखिल पोल साहब, मिस श्रुति, मिस्टर सचिन, और यहाँ पे जो बैठे हो सभी आदरणीय नेतागण, सामने बैठे हुए सभी एनजीओ, स्पेशल एजुकेटर्स और मेरे दिव्यांग भाई और बहनों, मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं समाज कल्याण मंत्रालय और दिव्यांग आयोग का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े तौर पे नेशनल पर्पल फेस्ट का गोवा में आयोजन किया और बहुत सारे परिसर नेशनल स्पोर्ट्स, चाहे वो दिव्यांग के लिए क्रिकेट हो, दिव्यांग के लिए टेबल टेनिस हो, या दिव्यांग के लिए कार रेस हो, या दिव्यांग के लिए मैराथन हो, इसका सभी क्षेत्रों में दिव्यांग के लिए बहुत सारी उनको बेहतरीन तरीके से आयोजन किया। देश में पहली बार इतने बड़े तौर पे खेल, शिक्षा, संगीत, कला, न्याय दिव्यांगों के लिए फ्री एड्स एंड अप्लायंसेस मुहैया कराया, सॉरी, और इसका फायदा 5000 से ज्यादा लोगों को होने वाला है। आज ओल्ड गोवा में इस ब्लाइंड एंड फेड डिफरेंसेस पे लोगों के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखा और हमें इसमें शामिल होने का मौका दिया, इसीलिए हम बहुत ही शुक्रगुजार है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक साथ आने वाले 5 दिनों में इतने सारे इवेंट आप करेंगे और पूरे भारत से आए हुए दिव्यांग जनों को एक अजीब सा अनुभव मिलेगा। आज तक की सभी सरकार ने ऐसा दिव्यांग लोगों को मुहैया करने का साहस भी नहीं किया है, वो अपने करके दिखाया, इसीलिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं इस महोत्सव के पूरे भारतवर्ष में दिव्यांग जनों को एक देखने का नजरिया बदल जाएगा। और मुझे इतना खुशी है कि आप लोग एक कुछ भी करके दिखाएंगे, आपको किसी का मतलब हेल्प लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हमारे समाज कल्याण मिनिस्टर और पावस्कर जी ने जो भी आप लोगों को बताया है, वो आप, मुझे इतना खुशी है, ये चीज जवाबदारी गोवा गवर्नमेंट ने और मोदी जी सरकार ने हमारा समाज सुभाष जी मंत्री जी के ऊपर जो दी थी और पावस्कर, ये 100% इसको ये लोग बहुत अच्छी से निभाएंगे। और मुझे खुशी है आने वाले दिनों में आप बहुत ही कुछ करके दिखाएंगे और एक मैसेज भी जाएगा पूरा इंडिया से बाहर, इसमें मैसेज जाएगा और भी हमसे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और हमारे ओल्ड गोवा से शुरू हो रहा है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं भी थोड़ा सा, मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट हमारा मिनिस्टर सुभाष जी ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा इवेंट है, मैं भी बहुत एकदम खुशी से इसमें दौड़ पड़ा कि मुझे भी देखना है, मुझे भी बोलना है कि थोड़ा सा समझ लेना कि मैं पहली बार इतना बड़ा आप लोगों के साथ इवेंट करूं। मुझे इतना खुशी है कि मुझे लगता है आपका पेरेंट्स को भी इतना खुशी देगा उतना मुझे आप लोगों को देख के मुझे खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ गोवा में बाहर से लोग आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ हमारा गोवा भी देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा सुंदर चर्च भी है, आप लोगों के लिए मौका है। और मैं आगे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग 101% किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका प्रयास करो। जो भी आप हमारे टीचर्स है, आप लोगों के इतना दिन ट्रेनिंग देंगे, उनका भी मैं शुक्र गुजारता हूँ। अभी सभी हमारा समाज कल्याण मंत्रालय, सुभाष पालेसाई जी, पावस्कर जी, कितना उनका टीम है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और ये खाली एक ही आदमी कर सकता था। समाज कल्याण मंत्री सुभाष पालेसाई, सीएम साहब ने भी, हमारा चीफ मिनिस्टर ने भी इनके ऊपर जो जवाबदारी दिया, क्योंकि ये 101% ये प्रोग्राम सक्सेस करेगा और वही कर सकता है कि ये मुझे 101% मालूम है कि ये मंत्री जी हमारा 100% परफेक्ट है और जो भी न्याय देगा यही हमको न्याय देगा। और हमेशा आप लोगों में मेरे आपको सबको शुभकामनाएं, आगे बढ़कर भी और नया साल का भी हैप्पी न्यू
Thank you, sir, Rajesh sir, for those wonderful words. And as the saying goes, all that starts well ends well. And to give the vote of thanks, may I invite Shri Taha Hazik, Secretary to Commissioner of Disabilities, Goan. Good morning all. On behalf of the Directorate of Social Welfare and Offices of State Commissioner for Persons with Disabilities, I hereby extend, I will not say thank you because we are starting today. So I will extend lovely moments and hoping for lovely moments till Sunday to all the participants here who have come right from all the 23 states, and extending my thanks to Shri Rajesh Desai, who has extended our invitation on just one call to be here. Our dynamic minister, as always, you have seen him now, Shri Subhash Desai, always been behind the whole concept. And I still remember the first meeting, sir, when I and Commissioner Sir came to you with the basic concept that we need to do this. Without thinking, he said, yes, you all go ahead. जो भी है देख लेंगे बाद, लेकिन ये करना है, ये dates आपने decide कर लिए, ये करना है और ये करके रहेंगे. उस वक्त we did not know how to go about, what were the things. He said, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. You all get with the program. And I remember that day we were only planning for around 2 days. But today we have started the pre-events from the 3rd. कल से हमारे pre-events already शुरू हो चुके हैं और हम लोग 8 तारीख तक के जा रहे हैं. And in these 5 days, not exaggeration, but we are having more than 75 to 80 events in the whole Purple Fest which is going on annually. So really great leadership of sir what we have. Our Commissioner sir, who's leading the whole show from the Commission's office. Our Director, seeing to it that everything goes well in the administration set. Mr. Akhil Paul, no introduction needed, and he's the person behind Sense International and behind maximum persons with blindness in the country. Shruti Lata, the kind of enthusiasm जो भी हमने पूरा देखा is lovely, really lovely. Father Maverick, Gabriel, Father Savio, these were the people who नहीं ये चीज करनी है, ठीक है, Bangalore से shift करना है, लेकिन the kind of commitment and the kind of connection what the team has to get all the persons with their blindness here. I believe Mr. Zamir is here in the audience, and Mr. Dipesh Sundaria, who is the founder of Enable India. Warm welcome and thanks a lot to everybody to be here, the press media, the St. Joseph's